हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। ये साइंस एक्सप्रेस का एक नया सीरीज़ है। ओके, इस सीरीज़ में हम 100 डेज चैलेंज के साथ साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, एंड ये जो सीरीज़ मेनली फोकस करके बनाया गया ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चंस एंड बेस्ड ऑन द NCERT। ओके, NCERT टेक्स्ट बुक। एंड ये 100 डेज चैलेंज है एंड ये ज़्यादातर रेलवे एग्ज़ाम के फोकस करके बनाया गया। ओके, एंड ये डे 1 है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। प्रेजेंस ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग मिनरल्स इन बनाना मेक देम स्लाइटली रेडियो एक्टिव। बनाना के अंदर कौन से रेडियो एक्टिव मटेरियल प्रेजेंट होता है? बहुत ही कम मात्रा में, स्लाइटली अमाउंट में। द आंसर इज पोटाशियम। ओके, and potassium its atomic number is 19 and पोटेशियम का सिंबल क्या है? K से हम पोटेशियम को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि पोटेशियम का जो लैटिन नेम है वो है केलियम। ओके, एंड अदर्स आर कैल्शियम इट्स एटॉमिक नंबर इज 20, सोडियम इट्स एटॉमिक नंबर इज 11 एंड सल्फर इट्स एटॉमिक नंबर इज 16। ओके, सो बनाना के अंदर जो रेडियो एक्टिव और रेडियोधर्मी जो गुण पाया जाता है वो पोटेशियम के कारण पाया जाता है। टोटल हाउ मेनी एलिमेंट आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने टोटल एलिमेंट पाया जाता है? द नंबर इज 118, दैट इज 180 एलिमेंट पाया जाता है। ओके, एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट किसने दिया? हेनरी मोजले ने। ओके, एंड ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया इसका अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ओके, एंड इस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय द हेनरी मोजले। सो टोटल 180 एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज कॉल्ड फिलोसोफर्स वूल? किस केमिकल को हम फिलोसोफर वूल्स के नाम के जानते हैं? दैट इज जिंक ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला है ZnO। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है? 30। ओके, एंड जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड इट बिकॉज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक? दैट मीन्स दैट रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड अल्कली टू गिव ए सॉल्ट एंड वाटर। ओके, सो जिंक ऑक्साइड is chemically is amphoteric in nature, that is called amphoteric oxide, and it react both acid and alkali to give salt and water. Okay, and so philosopher wool किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को। इसका फॉर्मूला है ZnO। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ग्रुप नंबर 13 इसको किस नाम से जाना जाता है? द आंसर इज बोरोन फैमिली। ओके, बी फॉर बोरोन, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर जो पहला एलिमेंट है वो है बोरॉन एंड दिस ग्रुप लाई इन द P ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज boron is the first element, then aluminium, that is we can represent Al, then gallium, indium, thallium and nihonium. Okay, these are the other element of group 13. Okay, so group 13 is known as a boron family. What is the first metal in the periodic table? Periodic table के first metal का नाम क्या है? The answer is lithium. Lithium Li से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको एंड लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3. ओके, एंड इट इज अ सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट alkali metal and it belong to group 1 in the periodic table. Okay, and it is the lightest of the solid element. Okay, so first metal in the periodic table, that is lithium, and its atomic number is 3. During summer, water kept in an earthen pot because cool. Because what is the phenomena behind this cool earthen pot? The answer is evaporation. Okay, the answer is evaporation. Evaporation is a form of vaporization that usually happen on the surface of liquid, and it involves the transition of liquid particle into the gaseous phase. Okay, because evaporation help the cooling of the earthen pot. Okay, diffusion, it is a process when
solute travel from higher concentration to lower concentration, and osmosis, it is a process when solvent transfer from higher concentration to lower concentration. Okay. A few substances are arranged in increasing order of the force of attraction between their particles. Which of the following represent correct order? यहाँ पर हम देखेंगे कुछ चीज़ दिया गया, हम अकॉर्डिंग टू देयर अट्रैक्शन, पार्टिकल के अट्रैक्शन के हिसाब से हम इसको अरेंज करेंगे. ओके. तो सबसे ज़्यादा किस में अट्रैक्शन होते हैं? सॉलिड में, उसके बाद होता है लिक्विड में, और लास्ट में होता है गैस के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स. ओके. तो आंसर इज ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर. ऑक्सीजन के जो पार्टिकल है उसमें अट्रैक्शन सबसे कम होता है. ओके. उसके बाद होता है वाटर के पार्टिकल में, और सबसे स्ट्रॉन्ग जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो शुगर यानी सॉलिड के पार्टिकल में. ओके. सो आंसर इज शुगर. शुगर से कम होगा वाटर का पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन, और उससे कम होगा ऑक्सीजन, दैट इज गैस के पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन. क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ विद दी व्हाट थिंग्स? क्रोमोसोम किससे बना होता है? द आंसर इज डीएनए एंड प्रोटीन. डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड प्रोटीन, द नेम ऑफ दिस प्रोटीन इज हिस्टोन प्रोटीन. ओके. Chromosome wrap around this histone protein. Histone protein is found in octamer form, and chromosome wrapped around it and from a structure that is nucleosome, and further condensation of these two structure from a thread-like structure, that is the chromosome. Okay. Chromosome we can look at here. This is the structure of chromosome, and in human body there is a 23 pair of chromosome found, both male and female body. In case of the male body and female body, 22 pair of chromosome are same, but the last pair, that is 23rd pair, is in case of the male body is XY, and in case of the female body the chromosome is X and X. Okay. So chromosome किस चीज़ से बना होता है? That is the DNA and protein. DNA, that is deoxyribonucleic acid. The undefined nuclear region of prokaryotes are also known as what? The answer is nucleoid. Okay. And nucleoid, that means nucleus like, but it is not a true nucleus. Okay. And is an irregularly shaped region within the prokaryotic cell. And but in case of the nucleus, what is the difference between nucleate and nucleus? In case of nucleus, it is a membrane bound structure in which eukaryotic assemble their genetic material. Suppose this is a prokaryotic cell and this is a eukaryotic cell. Okay. In case of the prokaryotic cell, and the genetic material that is found in this position, and that is the cytoplasm. But in case of the eukaryotic, the chromosome or genetic material that is found inside the cytoplasm, that is a present nucleus, and inside the nucleus genetic material is found. Okay. So genetic material cover up with a membrane like structure, that is nucleus, it is found in the eukaryotic cell, but in case of the prokaryotic, genetic material found in the cytoplasm. Okay. So answer is nucleoid. Okay. The cell wall of which one of these is not made up of cellulose? निम्नलिखित में से जो है इसमें किसका सेल वॉल सेलुलोज से नहीं बना होता है? द आंसर इज बैक्टीरिया. ओके. बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है ये बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन से. ओके. इट इज अ कंपोनेंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन. ओके. इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज. ओके. Silver nitrate solution is used to study to find out which of the following cell organelles. किस सेल ऑर्गेनल्स को स्टडी करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है? द आंसर इज गोल्जी apparatus. Okay, that is Golgi apparatus, and its main function is the packaging and secretion of protein, and it receives protein from the ER, that is endoplasmic reticulum.
Okay, here mainly two type, one is the RER and another one is the SER, and generally protein is developed from the RER because RER attached with the ribosome. Okay, ribosome present above the surface of RER and it help to synthesis of the protein in the RER. And what is the ACR? Smooth endoplasmic reticulum. It is responsible for the synthesis of the lipid. ओके, सो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूज किया जाता है गोल्जी apparatus को स्टडी करने के लिए. Cell arises from pre-existing cell. This statement was stated by which of the following scientist? Cell arises from pre-existing cell. ये जो स्टेटमेंट है ये किस साइंटिस्ट ने दिया? द आंसर इज रुडोल्फ विरचम. ओके, इन 1855. Okay, and who provide the cell theory? Sladen, okay, and Swan provide the cell theory. And who first discovered the cell? That is Robert Hooke. Okay, Robert Hooke. And who discovered the living cell? Robert Hooke discovered the dead cell. Okay, and in the year of 1665. And who discovered the living cell? Anton von Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek discovered the living cell. Okay, and who discovered the cell nucleus? Robert Brown. Robert Brown discovered the nucleus. Okay, which of the following is the only cell organelle seen in prokaryotic cell? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनल पाया जाता है? ओके, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता है. सारे सेल ऑर्गेनल्स जो पाया जाता है वो पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में. And only cell organelles found in the prokaryotic cell, that is ribosome. Okay, and ribosome is a cell organelles. It is a without membrane bound cell organelles. Okay, but the type of ribosome is different in case of the prokaryotic and eukaryotic. In case of the prokaryotic, ribosome is 70S type. Okay, and in case of the eukaryotic, that is ribosome is 80S type. What is the function of ribosome? It is a cell organelles and its main function is synthesis of the protein. Okay, main function is synthesis of protein, so it is called protein factory of the cell. Okay, which of the following cell organelles other than nucleus containing DNA? निम्नलिखित में से कौन सा सेल ऑर्गेनल्स ऐसा होता है जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है? डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है. द आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया. Mitochondria and plastid that is present in the plant cell, they both carry DNA. They carry their own DNA. Okay, because they carry their own DNA and protein machinery, they also carry protein machinery, so they can increase their number. Okay, and mitochondria, it is a double membrane bound structure. It is the main function is synthesis of the ATP, that is we can call it energy currency of the cell. Okay, ATP full form is adenosine triphosphate. Which of the following element does not lose an electron easily? Okay, ऐसे कौन से एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज नहीं करता? दैट इज फ्लोरीन. ओके, एंड फ्लोरीन it is represented by the F and its atomic number is 9. Okay, and it is the lightest halogen and it belongs to group number 17. Okay, it is the first element of the halogen group, and it is the most electronegative element. Okay, why fluorine does not lose electron easily? Because the fluorine is the most electron negative element. Okay, it actually wants electron. Okay, what is the electronic configuration of fluorine? That is 9, that is we can represent it 2,7. Okay, it wants one electron for their complete their last valence cell. Okay, so name of the element is fluorine. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.